Okay. We are done this question है. ये question तो हो गया था. Simple question है. Maximum minima is quite easy है. बहुत easy होता है. But we have a wide range of question. तो उसको करना पड़ता है. पहले से करे रहते हो आइडिया रहता है. नहीं तो मिस्टेक होने का डर रहता है. Some people find it difficult. Only those people find it difficult who don't understand the meaning of the language or they don't understand the language. Okay. Anyway, let's move. We have this question. Okay. Show that the triangle of the maximum area that can be described in a given circle is an equilateral triangle. This is the question we have. We are given a circle. Circle is given to us. That means the radius or center, whatever we have, is constant. Circle is given circle. And we need to prove that the triangle of the maximum area. Okay, we need to prove area is maximum. Area is maximum. Basically, I will have to differentiate area. Okay. And area is maximum. We need to prove that it has to be an equilateral triangle. Okay. So we need to prove. The question is that prove area is maximum. Area is maximum when it is equilateral triangle. That we need to prove. When it is equilateral triangle. Equilateral triangle. That we need to prove. Okay. Just a minute. There is a mistake in the question. No, the blunder mistake they have committed. और ये भी CBSE में जो भी है, most of the time you will find the language is something confusing, not very clear. NCERT में भी यही है और RD शर्मा वगैरह में the language is not very clear. But anyway, okay, ignore this point. Question is wrong. Question is completely wrong. They have said the triangle of the maximum area in a circle. Circle is given to us. We are given a circle. We are given a circle. We can have a number of triangles inside the circle. Radius is constant. Okay. We can have a triangle like this. We can have a triangle like this. We can have so many triangles. All the triangles will have different area. But we need to prove the area is maximum when it is an equilateral triangle. Suppose I take one side to be small a, one side to be small b, one side to be small c. Sides are small a, small b, small c. And we need to prove that a and b and c are equal. We cannot do this. We cannot do this. Because there are so many variables. As I told you in the calculus, in the maximum minima, I cannot solve the problem unless there is a single variable because we need to differentiate. But when we have A, B, C, three unknowns, I cannot convert B or C in terms of the A. I cannot make a single variable. The question is wrong. Now I'm going to make it correct. Just a minute. What is the correction I'm going to do? Just a minute. Instead of writing the triangle of the maximum area, we need to write, it is must to write triangle so that the isosceles triangle, isosceles. Okay. It should be given that triangle is isosceles. Otherwise, we cannot do. Okay. Now the question is that we need to prove the area of the isosceles triangle is maximum when it becomes an equilateral triangle. Okay. This is the question. Anyway, let's proceed. I'm having a isosceles triangle. That means this side and this sides both are equal. Okay. I cannot take one side to be A, one side to be B. Both are equal to the A. And the third side is here. And we need to prove that for the maximum area, this equilateral triangle will become equilateral. Okay. So I can prove sides are equal, or I can say each angle is 60 degrees. Both the ways are there. As I told you, always trigonometry is safe and easy. Always. Don't go by algebra way. Don't go by that way. Okay. It is going to be difficult. So I'm doing with the help of trigonometry. Okay. This side, this is a center. This side is the radius of circle capital R. This side is also R, and this side is also R. All the sides are equal. All of them are equal to the radius of the circle R, which is constant. I will bring the maximum number of constant in the expression. Anyway, what I'm saying, just take any of the angle to be theta. You can take this angle to be theta.
Am I right? Overall, the total angle A will become 2 theta. If you take theta, it will be theta by 2. It is your choice. You can do any of them. Okay. Okay. I have taken this angle to be theta. Just wait. Area of the triangle is half into base into height. I need to calculate base BC, and this is the M. M is the midpoint of BC because it is an isosceles triangle. Then M is the midpoint. Okay. So I'm writing area of the triangle ABC. I'm saying it is A. That is half into base into height. Okay. Just a minute. Base BC. How to write? Tell me anyone. जल्दी बोलिए कैसे लिखेंगे? Okay. Just a minute. This angle is theta by 2. So I can say this angle also theta. I'm just writing. I don't need it. In a circle, angle made at the center is double of the angle made at the vertex. Okay. So this angle is 2 theta. The total angle will be 4 theta, or I can say this angle will be 2 theta. Agree or not? Tell me. By geometry, we can say, according to the theorem that we have in the class 10th. Am I right? This is center O. Angle COM is 2 theta. Is it clear to everybody? जल्दी बोलिए. सेंटर पे जो एंगल होता है वो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है उसका डबल होता है ना? Okay. So I'm writing area half into base into height BC. BC is nothing, that is 2 times BM. BM or CM, you can write it, both are same. 2 times CM into height. Height is AM. AM is nothing, I'm just writing AM. Okay. So area, I can say that is 1 by 2 into 2 CM. CM, according to the geometry, I'm going to write CM, I can write that is R of sine 2 theta. R of sine 2 theta, opposite side. After that, AM. AM is AO plus OM. AO is R. After that, OM is nothing, that is R of cos 2 theta. Okay. Basically, I have got area that is 1 by 2, 1 by 2 gets cancelled. I will take common, that is R square sine 2 theta inside the bracket 1 plus cos 2 theta. Am I right or not? Tell me. Clear? Clear to everybody? जल्दी बोलिए. Yes, sir. चलिए ठीक है. Now I have got the expression for the area, and we are having only a single variable theta. R is a constant. So I need to differentiate it. I will calculate dA by d theta. I will make it 0. Okay. Now, all of you, please proceed yourself. Calculate dA by d theta. Make it 0. Then you will get the value of theta. Okay. Theta may be 30 degree, 60 degree. What I am saying, you will get theta to be 60 degree. No, theta to be 30 degree. Angle is 2 theta. Okay. Then 2 theta or angle A will become 60 degree. Just calculate and tell me the value of theta. Calculate dA by d theta, make it 0. I will get a trigonometric equation, and that we will have to simplify. Please complete it, huh? Hamza, Harsh, huh? Jayashri, all of you, please hurry up, huh? वेदांग, अरे वेदांग आपके क्वेश्चन रह गए हैं भाई. चलिए मैं करा दूंगा. Yesterday I could not do. Okay. हाँ, मैं देख लूंगा. अगर वो सिंपल होंगे तो आपको इंडिविजुअल सॉल्यूशन भेज दूंगा. और नहीं तो फिर आई विल टेक इट. रिमाइंड मी, बस रिमाइंड करा दीजिएगा हर हालत से. बाय सैटरडे आई विल डू दैट है. ओके. हाँ, वो रिमाइंड करा दीजिएगा, नहीं रह जाएगा. आजकल थोड़ा सा बिजी है ना, अभी आज से फ्री हूँ. आज टुडे आई एम ए लिटिल फ्री. ठीक है. एंड फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द पैनल. हाँ, वो सब शूटिंग में लगा हुआ था, बुरी तरह से उसमें डिस्टर्ब था. हरी अब, हरी अब.
एक चीज है, बता रहा हूँ बार बार, पहले भी कहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिए अच्छे से, वो काम आती है बहुत ज्यादा, और पार्टिकुलर इन दिस चैप्टर, बट इट्स वेरी कॉमन थिंग दैट वी शुड नो. हाँ, एनीवे आई एम प्रोसीडिंग, टाइम लगा देते हैं आप लोग, दिक्कत आती है. आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डी बाई डी थीटा को जीरो कराएंगे तो साइन टू थीटा आ जाएगा, आर स्क्वायर छोड़ दे रहे हैं, वो तो कांस्टेंट है. साइन टू थीटा, I will differentiate the second term cos 2 theta, that will give me minus of the sin 2 theta into 2. This is a differentiation. Plus I will write 1 plus cos 2 theta, and I will differentiate sin 2 theta, that will give me cos 2 theta multiplied by 2, and that is equal to 0. Am I right? jaldi boliye. Clear hai? Okay, what I am getting, this two gets cancel. हाँ, दोनों 2 तो cancel हो जाएंगे. After that, I am getting minus of the sin square 2 theta, and there I am getting cos square of 2 theta. Just pay attention. I got a very simple, very easy term. हाँ, बहुत अच्छी term आ गई है. Okay, I have got minus of the sin square 2 theta. अभी trigonometric equation में कोई tough equation आ ही नहीं रही है. Okay, sometimes we get a good equation, tough equations. Minus sin square 2 theta. I'm opening the bracket. I have seen something. मैंने कुछ देख लिया है. ठीक है, तभी से मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, otherwise I will not open the bracket. After that, plus of the cos 2 theta I'm having, and I'm having cos square 2 theta. I have got very simple term. Now this term and this term, cos square 2 theta minus sin square 2 theta, together will become cos of 4 theta. Okay, so I can say I'm writing cos 2 theta term first, and this term together has given me cos of 4 theta has to be 0. We have done, I have told you to solve this equation by 3 different methods. Okay, I'm not going to repeat it all the time. Now I'm solving this by doing cos C plus cos D. That is better. Otherwise, I can transfer cos 4 theta on the right side. I will write cos 180 minus 4 theta. That is also good thing, but try to use cos C plus cos D, sin C plus sin D. That is a better method. So cos C plus cos D, that gives me 2 cos C plus D by 2. 2 theta plus 4 theta by 2, that is 3 theta. After that, cos C minus D by 2, that will give me 2 theta by 2, that is theta equal to 0. So I have got a result that cos 3 theta is 0, or cos theta is 0. Okay. When cos theta is 0, that means theta is pi by 2. When I take theta to be pi by 2, the angle A is 2 theta, that becomes 180 degree. That is not possible. It is absurd. I will have to delete it. I can get pi by 2, 3 pi by 2, so many things. And so I'm deleting. Cos 3 theta is 0, so I'm getting the value of 3 theta. That is equal to pi by 2. Or I can write 3 pi by 2 also. And so on. So many things we can write, but 3 pi by 2, if I write, I will get theta to be more than 180 degree, just leave it. 3 theta is pi by 2, so I'm getting theta to be pi by 6 or 30 degree. When theta is 60 degree, okay, theta is pi by 6 or 30 degree, I'm writing into degree, the angle A is 2 theta. So angle A is 2 theta, or that is 60 degree. I have got the value of angle A, that is 2 theta. But in the very beginning, I had told you that this is an isosceles triangle. I had taken AB and BC to be equal. Okay, and for that reason, I had said the angle M is the midpoint of BC. Okay, now angle A is 60 degree, angle B, angle C will be equal because sides AB and AC are equal. Okay, so this angle and this angle has to be same. So that means angle B is equal to the angle C, and both has to be 60 degree. That means it is a equilateral triangle. I got the answer, that is a equilateral triangle. Got it clear to everybody? जल्दी बोलिए. Yes, sir. एंगल ए निकाल लेंगे, बाकी ज्योमेट्री से बी और सी बराबर आने, दोनों ही 60 डिग्री हो जाएंगे. हैं
इक्विलेटर होना जरूरी था, वो मैंने पहले ही बता दिया था, उसी को लेके स्टार्ट किया था मैंने। ओके, लेट्स मूव। चलिए, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम इनोवा के क्वेश्चन जो है करने में अच्छा लगता है, ठीक है। नो एनीवे, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, जस्ट रीड द क्वेश्चन। बस यही प्रॉब्लम रहती है कि मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग द लैंग्वेज। A wire of the length 60 meter is to be cut into two pieces. One of the pieces is to be made into a square and other into a circle. What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and circle is minimum? It's very simple question, very easy question. I will just give you the hint. I will explain the question. You will do yourself. अपने आप करिएगा. We are given a wire AB. I am taking its length to be 36. Okay. We are cutting it into two pieces. Okay. Length of one piece I am taking to be x, and length of the another piece will be 36 minus x. Okay. From the length x, I am going to make a square. However, we can make the square from the 36 minus x also, it doesn't matter. From one length, I am making a square. And from the another length, 36 minus x, I am going to make a circle. Okay, we need to find the value of x so that the combined area of the square and circle is minimum. They have asked about the minimum, so I will get the minimum value. Okay, no need to worry whether it is maximum minimum. Second derivative will come positive, but we never show it. Usually we don't show it. The same thing I have done here. I have got theta to be 30 degree or angle to be 60 degree. I have not done the second derivative. Usually we skip it. Otherwise, I will calculate second derivative. I will find it to be maxima, because maximum we need to prove. It will come maxima itself. Okay, don't worry for that. Okay, combined area of this and this. We need to minimize. Okay, what I'm saying, from the length x, I have made a square. The side of each, okay, length of each side will be x by 4. X by 4 I have shown. Okay, after that, I'm taking its radius of the circle to be r. But the length or the circumference of the circle is 36 minus x. So I can say 2 pi r is equal to 36 minus x. Okay, or the value of r, I can say 36 minus x divided by 2 pi. Now I'm going to write the area of the combined figure. So area I can say is nothing, that is area of the square, that is x square by 16, plus area of the circle, that is pi r square, okay, small r square. Okay, you will compute. I am not going to do x square by 16 plus pi. Okay, I will write r in terms of the x. I will make a single variable. So r square, I can say that is 36 minus x whole square divided by 4 pi square. So basically, I have got the expression for the area, that is a is equal to x square by 16 first term. After that, pi will get cancelled. I am left with 36 minus x whole square divided by 4 pi. Okay. Now calculate dA by dx, make it 0. Calculate dA by dx and make it 0. Then you will get value of the x. Okay. Completed. The value of x, the answer we are having is 144 upon pi plus 4 or 30 pi upon pi plus or whatever. One of them is x, one is 36 minus x. I am not sure. But answer, the value of x will be in terms of the pi. Don't be afraid of that. Just tell me. Complete it yourself. I am not going to do. I will not do this. मैं नहीं करूंगा, बता दे रहा हूं मैं, सीधी सीधी बात. Sir, done. Done. Very good. Very good. कितना आ गया x की वैल्यू? Sir, x is 144 upon 4 plus Right. 5. X upon 1 pi plus 4. Okay. This is the value of x. Okay.
That means Sir, from sir, should I ask my doubts on Saturday? सैटरडे पूछ लीजिए, अभी भी पूछ सकते हैं, जिस सैटरडे को कर लीजिएगा जरूर कर लीजिएगा, है ना? Oh, ठीक है। okay. व्हेन आई स्टार्ट द क्लास, अब मैक्सिमम में खत्म कर दूं, मैक्सिमम में खत्म कर दूं। आप सैटरडे को जैसे ही मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ इमीडिएट पूछ लीजिएगा, नहीं तो रह जाता है। ठीक है ना? Okay. हाँ, आई गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, फ्रॉम दिस साइड आई विल मेक द स्क्वायर, एंड the another side is 36 minus x. This is 36 minus x, that you can write 36 minus x is 144 upon pi plus 4. Okay, if you simplify it, you are going to get how much? 36 pi divided by pi plus 4. Okay, from this side you will make the circle. Okay, no problem. Can I proceed? चलिए अपने आप कर लीजिएगा, no need to waste time for all those kind of things. Just read this question. Just read this question. A square piece of the tin of this is made into box with topping the square on the east side and folding flower. Just read this. Read it. Just follow the question what he is saying. Huh? Okay. A square piece of tin of 24 centimeter is to be made into a box without top. Okay, top is nothing is on the top. Open tank is there. By cutting the squares from each side and folding up the flaps from the corner. This is something we do in the craft work in the class 4, 5, 6. Huh? In the childhood, we do this kind of the craft work. Okay. What should the side of the square to be cut off so the volume of the box is maximum? We need to prove the volume is maximum. Okay. So they have said maximum, it will come maximum. No need to worry for that. Anyway, in the childhood, we have done something like this craft work. ये ऐसे होता है, ये बता रहा हूँ. We are given a square piece of the side 24 centimeter. From this, all the corners, I will cut some pieces. I will cut the corners. ऐसे होता है. ध्यान करिएगा, ऐसे हो. This side is x, this side is x. इसको भी x ले रहे हैं, इसको भी x ले रहे हैं. ये भी x है. So ये जो हमारे पास कॉर्नर्स होंगे, आई विल कट इट आउट एंड आई विल फोल्ड इट अप, और इसको ऊपर की साइड में फोल्ड कर देंगे. आई विल फोल्ड इट अप साइड, देन आई विल गेट ए बॉक्स. डू यू नो इट? मालूम है ना? Yes. So I will, if I fold this up, I will get a shape something like this. This will be open at the top, and the height of this box will become h. Just a minute. फिगर आजकल अच्छी नहीं बन रही है, अब खल जाता है. Anyway, just leave it. I will get a shape something like this. गलत बन गई है फिगर. जब दोनों लाइन जब पास पास आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है. फिगर लार्ज हो गई है, बट एनीवे फॉरगेट अबाउट दिस. The height of the box will be x. Am I right? And this side is x, this side is, this is 24 minus x. Total length he has given 24 minus x. I will get a box. Okay, its one side will be 24 minus x, another side will be 24 minus x, but the height will be x. Am I right or not? जल्दी बताइए. क्लियर है? Yes, sir. Then forget this. Not do the question yourself. What should the side of the square to be cut off? He is asking the value of x, so that the volume is maximum. The volume of the cuboid, I can say that is 24 minus x whole square into x. This is the volume of the cuboid. Yes. Sir, won't it be 2x? Yes, it will be 24 minus 2x. I have written wrong. गलत लिखा है. ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ तो दिक्कत आ जाती है. 24 minus 2x. Minus 2x. Okay. Make it 24 minus 2x whole square into x. This is the volume of the cuboid. Calculate dv by dx, make it 0. Then you will get the value of x. जल्दी कर लीजिए. हमने कहा ना वैरायटी बहुत है, क्वेश्चंस में वैरायटी बहुत है. तो एक बार अगर क्वेश्चन कर रहे थे तो आइडिया रहता है, तो कभी हमें नया नहीं लगता है. We get a confidence है ना, कॉन्फिडेंस रहता है.
Just do it, जो जल्दी करिए. We need to do some questions on the coordinate geometry also. है coordinate geometry के ऊपर भी क्वेश्चन करना है. अप्लाई यू टू वी. हाँ, यू टू वी लगा दिए, फटाक से डिफरेंशिएट हो जाएगा. So done. Okay, okay. If you make dv by dx, I will get x to be 4. x की वैल्यू 4 आ जाएगी. ठीक है. आफ्टर दैट फाइंड इट्स वॉल्यूम. इसने इसका वॉल्यूम भी पूछा था. तो वॉल्यूम आई कैन से दैट इज नथिंग, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पर रख दीजिए. तो 24 माइनस 2x, 2x मीन्स 8. इट्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x, दैट इज 4. 24 माइनस 8, 16 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4. इसको कर लीजिएगा तो 256 इंटू 4 आ जाएगा. दैट विल गिव मी 1024 सेंटीमीटर क्यूब. यूनिट्स लिख दीजिएगा. स्कूल में बोर्ड के एग्जाम में यूनिट्स जरूर लिखिएगा. यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दीजिएगा. हाँ, डोंट फॉरगेट दिस. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. जस्ट रीड दिस क्वेश्चन. ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं. दे आर इजी आल्सो. A figure consists of a semicircle with a rectangle on its diameter. Given that the perimeter of the figure, perimeter is a constant, perimeter of the figure is constant, find its dimension in order that the area is maximum. Okay. Now I'm explaining the question. A figure consists of a semicircle with a rectangle on its diameter. Okay. I'm changing the question, and it is the same thing. I'm saying we have a rectangle. We have a rectangle. I'm changing the question. I'm saying there is a window. There is a window, rectangular window. On top of that, I'm having a semicircle. It is the same thing, no? इसमें उल्टी फिगर कर दीजिएगा तो सेमी सर्किल नीचे आ जाएगा, रेक्टेंगल ऊपर हो जाएगा. ठीक है. इट इज द सेम थिंग. आई एम हैविंग ए विंडो इन दिस शेप. ओके. द बेस is a rectangle and the top I have a semicircular arc. And the question usually we find in the books is that find the dimension of the window so that the maximum light enter into the room. हाँ, रूम के अंदर मैक्सिमम लाइट चाहिए, यानी कि एरिया मैक्सिमम करना है. Subject to the condition perimeter of the figure or perimeter of the window is constant, that is given to us. Okay. So P is the perimeter, and that is constant. We need to find the dimension of the window so that the maximum light enters into the room or the area is maximum. Okay. Is the question clear? Can I proceed? जल्दी बोलिए. Yes, Yes. sir. चलिए ठीक है. वो डिफरेंट लैंग्वेज में सेम चीज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं. सो perimeter is constant, keep into the mind. I am getting the answer in terms of the P. P is the perimeter. So I'm taking the radius of the semicircle to be R. This is also R. So I can say the base length of the base is 2R. One side is 2R and one side I'm taking X. This side is X, this side is X. So I'm just writing the expression for the, we are having two variables. One is X, one is R. Okay. But anyway, I'm writing the perimeter of the figure. That is 2R plus 2x. After that, pi r, that is the half of the circumference. And that is given to us, that is P. Anyway, I can say that is nothing 2x plus pi plus 2 into r is equal to P. Now I will write the expression for the area. I will convert x into r or r into x. Which one is easier for me? But anyway, don't write anything now. Make this equation number 1, just leave it. After that, area of the figure, I can say that is nothing, that is 2rx. Area of the base plus half of the pi r square, half of the area of the semicircle, pi r square. In this figure, what I notice in this expression,
what I notice, I'm having r at two places. So don't change r. Here is r square also. Write x in terms of the r. That will be easy for me. Okay. So I'm writing the value of x in terms of the r, basically 2x. Okay. So r is there, the 2x value, I can say that is nothing, p minus pi plus 2 into r. Okay. After that, 1 by 2 of pi r square. Okay. Now just open the bracket because I need to differentiate. Opening the bracket, the differentiation will be easy for me. P is a constant, don't worry for that, PR. After that, pi plus 2 would be there. After that, r square is there. Okay, just leave it 2 times, no problem. After that, 1 by 2 pi r square is there. Okay, this is the expression. We need to do maxima for this. Okay, no need to worry. Just calculate dA by dr. Do dA by dr, make it 0. Then you will get the value of r in terms of the p. Okay, all of you please complete it. जल्दी कर लीजिए. आज मैं क्वेश्चन पूरे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी करिए भाई, अच्छी चीज नहीं है कि मैं कंप्लीट करूँ क्वेश्चन. दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर यू, आपके लिए नुकसान करेगा. हरी, हाँ जल्दी से. The value of x will be p minus pi plus 2 into r. Which minus? Value? हाँ Value बोलिए. of x. Value of x. अच्छा, वैल्यू ऑफ एक्स इज पी माइनस. ओके, आई हैव डन मिस्टेक. है, देखो मैं गलती कर रहा हूँ ना. ओके ओके, इट इज ए माइनस साइन. ओके, वैल्यू ऑफ द 2x p माइनस ऑफ दैट मच. ओके, सो आई विल गेट हियर माइनस साइन. चलिए कंप्लीट करिए. माइनस साइन इज देयर एंड माइनस साइन इज देयर. ठीक है. नॉट गेट द वैल्यू ऑफ आर. हाँ, मिस्टेक करता हूँ तो बताइएगा. क्विक है, जल्दी कर लीजिए. मैं क्वेश्चन देख लूँ, खत्म हो जाएगा सारे क्वेश्चन. ओनली 2-3 क्वेश्चन आर देयर. ठीक है, वेदांग आपके क्वेश्चन अभी ही करा दूंगा, अभी टाइम रहेगा मेरे पास. एंड लेट मी सर्च. मेरे पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे. अभी अभी मैं देख लेता हूँ, सर्च कर लूंगा, करा दूंगा. हो गया. So done. Okay, very good, very good. Let the other do. Let me search the question I have in the mobile somewhere. किसी ने पूछा था, अच्छे क्वेश्चंस थे. एंड लेट मी सर्च. है, मुश्किल हो जाती है ना, यही परेशानी आ जाती है समटाइम्स. नाम से सेव नहीं होता ना, तो दिक्कत आती है. सर्च नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल हो जाएगी. एनीवे, एवरीबॉडी गॉट द आंसर, जल्दी बोलिए. हम्म एवरीबॉडी गॉट द आंसर. डी ए बाई डी आर को जीरो कराएंगे, डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो आई विल गेट पी हियर डी बाई डी आर ऑफ आर इज 1 minus pi plus 2 is there. R square will give me 2r. After that, 1 by 2 and pi r square will give me 2r. And I'm making it 0. So what happens? This gets cancelled. So
I'm getting value of the P is equal to 4 pi. Am I right? 2 pi. क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ गलत आ रहा है क्या? आई एम गेटिंग माइनस, उस साइड चला जाएगा तो 2 पाई आर, जस्ट a minute, 2 pi r. I am opening the bracket 2 pi r. After that 4r, and here I will get minus of the pi r. So basically I have got the value of the p. On the right side I can take common r. So 2 pi minus pi will give me pi plus 4 multiplied by r, or the value of the r I am getting it to be p divided by pi plus 4. Okay. So radius is p divided by pi plus 4. This is one answer. And another side is x. I need to write the value of x also. He has asked about the dimension, the length and width, everything he has asked. So I need to write the value of x. The value of x I can write from the equation number 1. From the equation number 1, I can say 2x plus pi plus 2. I am putting the value of r, that is p upon pi plus 4. And that is equal to the p. I need to simplify it. That's all. So what I'm getting, the value of 2x, I will transfer this time on the right side. I will take p common. So 1 minus pi plus 2 divided by pi plus 4. Everything multiplied by p. If I solve it, then I'm getting the value of x is equal to, okay, in the numerator, pi will get cancelled. 4 minus 2 will give me 2p, and 2 will get cancelled. I am left with the p only divided by p plus pi plus 4. And that is my answer. Clear? No problem? Or some mistake? जल्दी बोलिए. Okay, I am getting x and r both to be equal. They have given a answer 2p. Okay, and one answer 2p. I have got the value of r, that is the radius of the circle. Okay, but I need to write the dimension. Dimension is the length of the width, that is 2r. Dimension, I need to write the dimension of the window, basically x and 2r. So I have got the value of x, or basically diameter, the length or whatever it is, a 2r. I need to write the value of the diameter, that is 2p divided by pi plus 4. Now the answer is matching. Clear? Clear to everybody? जल्दी बोलिए. चलिए आगे बढ़ रहा हूँ. आप लोग रिस्पॉन्ड करा करिए. आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते ना, उसमें दिक्कत आती है थोड़ी सी. थोड़ी नहीं, काफी दिक्कत आती है. Sometimes I don't understand whether you have followed or not. But anyway, find the volume of the largest cylinder that can be inscribed in a sphere of the radius r. Okay, we are having a sphere. Its radius he has given is small r. Okay, this is a sphere. It is not a circle. First thing, radius small r is a constant. Sphere is given to us. We can make number of the cylinder inside the sphere, but we need to prove that the volume is maximum. Okay, and okay, he is asking the value of the volume, maximum volume, value of the cylinder. He's asking. Just wait a minute. I will tell you height and diameter also of the cylinder. Better question is that we need to prove the diameter is double of the height, or the height is double of the diameter. I don't know. This is the question, original question. बात फॉलो कर लिया ना? वॉल्यूम की वैल्यू पूछिए, लेकिन एक रेशियो आएगा, हाइट डिवाइडेड बाय डायमीटर. ऑप्शन के अंदर ये आएगा. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट टू द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर? ऑप्शन के अंदर 2 होगा, 1/2 होगा, या 1 होगा. इस तरह के ऑप्शंस होंगे. बट एनीवे, just wait. I will change the question later on. ऐसे I am having a cylinder inside the sphere. I will go by trigonometry. Trigonometry use करेंगे. सीधी सीधी बात है. I am having a cylinder. Okay. Cylinder की फिगर जब बनेगी तो ये ऐसे बन जाएगी. It's clear. It is the center of the sphere, and radius of the sphere they have given smaller. Okay. Now I am taking one angle to be theta. I am taking this angle to be theta.
I'm having a cylinder, volume of the cylinder I'm writing. Volume of the cylinder, we have the formula pi. Radius of the cylinder I'm taking to be capital R. Okay. Pi into capital R square, I am taking its height to be h. क्वेश्चन के अंदर ये होगा हाइट ऑफ डायमीटर का या हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर का रेशियो पूछा जाएगा. दैट इज द ओरिजिनल क्वेश्चन, दैट इज अ बेटर क्वेश्चन. ओके. Pi R square into capital H. But I will not do algebra or solid geometry. Nothing. I will go with trigonometry. I'm going to convert each and everything in terms of the theta, and small r is a constant. So volume we can write that is pi into capital R. From the figure, from the geometry, I can say capital R is nothing, that is r cos theta. R cos theta, its whole square. After that, I need to write the value of h. H will be double of this much. This side, from the geometry, we can say that is r sin theta. So capital H will be 2 into r into sin theta. Okay. So basically, I have got the expression for the volume, that is pi, and 2 is also there. 2 pi r cube will be there, cos square theta into sin theta. That's all. I have got the volume as a function of theta, so I can differentiate it. I am calculating dv by d theta. I will make it 0. I'm writing directly. I'm writing dv by theta to be 0. 2 pi r cube is a constant. Leave it aside. So I am getting cos square theta. D by d theta of sin theta is cos of theta. After that, I will get a plus sign. I will write, it will become minus later on. Sin theta is there. I will differentiate cos square theta. That will give me 2 cos theta. After that, differentiation of cos theta is sin theta minus sin theta. I have put sin theta there. Minus sin theta, that is 0. So basically, what I have got, this cos theta will get cancelled. Okay. Or sometimes cos theta may be 0. That means theta may be 90 degree. And when theta is 90 degree, this angle cannot be 90 degree. Okay. ये angle 90 degree नहीं हो सकता है. So that is related. So basically, I have got cos square theta. That is 2 sin square theta. Or I got the value of sin square upon cos square, that is tan square theta. So tan theta is 1 by root 2. Am I right or not? Jaldi boliye. Clear? Clear to everybody? Jaldi boliye. Yes. Okay, okay. Now I'm doing one question, the ratio. I'm just writing ratio. This is important. ये पूछा जाता है, क्वेश्चन मिलेगा, बुक में मिलेगा, रेशियो होगा. तो रेशियो, they have not asked ratio of the height and diameter या radius and dia of cylinder. Okay, spelling सही कर लीजिएगा, छोड़िए. Height and diameter, height is capital H and diameter is 2 into capital R. Okay, height I have said that is 2r sin theta, 2 small r sin theta, and 2 times capital R I had calculated, that was small r cos theta. Am I right or not? जल्दी बोलिए. ठीक है. So what happens? 2r gets cancelled. I am getting its value to be tan theta, and tan theta is 1 by root 2. So height ratio diameter. So height ratio diameter, that is tan theta, that is 1 by root 2. ये क्वेश्चन हो जाएगा. क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? जल्दी बोलिए. Yes, sir. Okay, Yes. okay. But anyway, forget about this, and come to the original question. He has asked the value of the volume. I'm calculating it. So the value of the volume, this is maximum. No need to do second derivative. Forget this. That is 2 pi r cube cos square theta into sin theta. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. tan theta I know that is 1 by root 2. Just draw a triangle. ये सब चीजें मैं पहले कर चुका हूँ, पहले बताया होगा. ठीक है. Take this angle to be theta. Tan theta I have got 1 by root 2. This side is 1. This side is root 2. This side becomes root 3. Okay, according to Pythagoras. Now just put the values. 2 pi r cube cos square theta, we can say that is 2 by 3. Sin theta, we can say that is 1 by root 3. So volume maximum, I am getting 4 pi r cube divided by 3 root 3. That is my answer. And that I think we had to prove. Let me check it. 4 pi r cube upon 3 root 3. That we had to prove.
Clear to everybody? जल्दी बोलिए. Yes, sir. हाँ, चल लेट्स मूव. अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है. मैक्सिमम इना के क्वेश्चन करने में अच्छा लगता है. बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई एम मिसिंग वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर पैराबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, उसके बीच का डिस्टेंस होगा, मिनिमा करना होगा. ये क्वेश्चन मिस हो रहा है. और आई एम मिसिंग क्वेश्चंस जिसके अंदर कोन के ऊपर क्वेश्चंस होंगे. कोन के ऊपर क्वेश्चन आई विल सर्च इट. अभी सर्च करता हूँ, टाइम है मेरे पास, मैं सर्च कर लूंगा, मिल जाएगा तो अभी कराऊंगा. तो कोन के क्वेश्चन मिस हो रहे हैं, इनकम्प्लीट है स्लाइड. वो होने चाहिए, वो है नहीं इसमें. बट एनीवे, मूव इट. Show that a cylinder of a given volume which is open at the top. I am having a cylinder which is open at the top, has the minimum total surface area provided its height is equal to the diameter. Radius. Height and radius we need to prove equal. अभी फिगर बनाता हूँ, फिर बताता हूँ. Cylinder, we are having a cylinder. We are having a cylinder. बहुत बड़ी फिगर बना दे रहा हूँ. ठीक है. And keep into the mind, it is open at the top. Which is open at the top. There is nothing at the top. Has the minimum total surface area. That means we need to minimize or maximize whatever of the surface area and total surface area. That means the cut surface area plus surface area of the bottom, provided its height is equal to the radius. Surface area is minimum, but height and radius both are equal. That we need to prove subject to the condition volume is constant of a given volume. Volume is constant. ये सब परेशानी आती है, क्वेश्चन को समझना पड़ता है. Volume is constant. Okay, it is given to us. Okay, that is V. Let's start. बहुत छोटा क्वेश्चन है, easy question है. Volume is constant. I am going to write the value for the volume. I am taking its radius to be capital R. यहाँ पे show कर देना. Height I am taking to be capital R. The volume of the cylinder is pi into capital R square into H. I have two variables, capital R and capital H. But anyway, forget this. Now I am going to write expression for the surface area, total surface area. Total surface area is area of the base, that is pi R square. It is open at the top. There is nothing at the top. Plus curved surface area, that is 2 pi RH. Okay. I have two variables R and H. I need to convert into single variable. To me, it looks that putting the value of H will be better. Otherwise, I will have to change R at two places. And R square term is also there. So I am writing pi R square plus 2 pi capital R. The value of the H from the first equation, I can say that is V upon pi R square. So basically, I have got the expression that is pi S is nothing pi R square plus pi gets cancelled, R also gets cancelled. So I am getting 2V divided by R. Okay, I am making this equation number 2. Now, nothing is left. I have got surface area as a function of R. I will differentiate it. Calculate ds by dr, make it 0. When you make it 0, you will get the value of R in terms of the S, in terms of the V. Okay, just do it, complete the question. जल्दी करिए. R की वैल्यू V के टर्म्स में आ जाएगी, या V की वैल्यू R के टर्म्स में, जो भी कह लीजिए. कंप्लीट इट, जल्दी करिए. So done. Done, very good. चलिए,
What the expression you got? Tell me, Vedant. Sir, R is equals to V upon pi to the power 1 by 3. Okay. R, that is V divided by Pi pi whole power 1 by 3. whole power 1 by 3. Whole power 1 by 3. You got this. Am I right? Yes, sir. Okay. So what I'm saying, don't do this kind of things. ये सब चीजें ना करिए. Don't write power 1 by 3. Okay, ये सब मत करिए. Just get this expression. You got this expression. That is volume. That is pi r cube. You got this expression, है ना? ठीक है? So Yes. just leave it as that. You got the relation between V and R. You got V to be pi r cube. Forget this. Huh? Don't simplify it. Go to the question number 1. Go to the question number 1. Put V to be pi r cube. Left side V is pi r cube. Right side I am getting pi r square into capital H. Pi gets cancelled. R square get cancelled. I am getting R to be H. That means radius of the cylinder and height has to be equal when surface area is minimum. Am I right? Subject to the condition volume is constant. Volume constant है तो surface area minimum आ रहा है when R and H are equal. Am I right? Clear? Yes, sir. Let's move. ज्यादा simplify ना करा करिए, ये आदत अच्छी नहीं है. So just get the expression. After that, if I need, I will take the cube root. Otherwise, don't take. Just get the relation. Simple relation, easy relation that we can understand easily. चलिए. Now let's move to the next question. Show that the height of the closed cylinder, cylinder is closed, of a given surface area and maximum volume is equal to the diameter of its base. Okay, we have a cylinder. Cylinder is closed. अब यहाँ पे कमी है क्वेश्चन में बताऊंगा अभी. अब ये सब मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक है. Okay, show that the height of the closed cylinder of the given surface area and maximum volume is maximum. Volume को मैक्सिमा या मिनिमा जो भी करना है is equal to the diameter of the base. Given surface area. No. Of maximum volume. Okay. Given surface area. Surface area जो भी है वो constant है. ये मैं लिख दे रहा हूँ, भूल जाता हूँ. Surface area is a constant. Given surface area, that is a constant. ये दे रखा है इसमें. When volume is maximum, we need to prove when. Equal to diameter of the base. Height is equal to diameter of the base. Height and diameter both are equal. Okay. When height is equal to 2 times of the radius or diameter. Clear? Is the question clear? Jaldi boliye. This is R. Question clear है? जल्दी बताइए. Yes, sir. हाँ, चलिए ठीक है. Similar question है that we have done before. पुराने वाले क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट था. In this question, surface area is constant. In the previous question, it was a open tank, open था at the top. In this question, it is not mentioned. नहीं mentioned, it is closed. ठीक है ना? It is closed cylinder. इससे कह दिया था टॉप पे बॉटम पे दोनों पे हमारे पास जो है मटेरियल है. It is closed cylinder. This is the difference that we are having. But there is a confusion in the question. They have said the given surface, okay, area, given surface area. That means curved surface area or total surface area. It is not clear. Am I right or not? अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है क्वेश्चन के अंदर. ऑफ ए गिवन सरफेस एरिया. एरिया वर्ड यहाँ पे छूट गया है. एरिया लिखना चाहिए तो मिस हो गया होगा टाइपिंग में. ठीक है. तो सरफेस एरिया इज गिवन टू अस बट इट्स नॉट क्लियर whether is a total surface area, that means area of the top, bottom and the curved surface area, or he is talking about only the curved surface area. It is not very clear to us. Am I right or not? जल्दी बोलिए. बात फॉलो करिए ना. कंफ्यूजन है थोड़ा सा, है ना? Yes.
ओके, हाँ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन, लेकिन कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। अब ये बहुत चीज साफ लिखनी चाहिए, कभी ये गलत लिखा है, ये एनसीईआरटी में है दिक्कत। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि इसने दे हैव यूज ए वर्ड क्लोज सरफेस एरिया। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, लेट मी सेव इट। पेन टैब थोड़ा सा हमारे ख्याल से दिक्कत कर गया है। जस्ट ए मिनट। अब कुछ चीजें जो है ना ऐसी है, अपने आप भी समझना पड़ता है। अब वो क्वेश्चन की कमी होती है, जो भी कहिए उसे, अब क्या कहा जा सकता है। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट है, वो पेन टैब हल्का सा इशू कर गया है। हाँ ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ एक चीज को। हाँ, it is not very clear that he is talking about the total surface area or only about the cut surface area, but they have used the word closed cylinder. They have used the word closed cylinder. तो जब क्लोज सिलेंडर का वर्ड यूज कर लिया तो दैट मीन्स दे मीन टोटल सरफेस एरिया, नहीं तो ओपन हो या क्लोज हो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है ना। सो they have used the word closed cylinder area, that means they are talking about the total surface area, and that total surface area is constant, but it should be mentioned very clearly। वो clearly नहीं लिखा है, वो mistake है। So what he has said, the total surface area, pi r square at the bottom, pi r square at the top, basically 2 pi r square plus curved surface area is 2 pi rh, and that is constant। I'm taking it to be s है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बना के छोड़ दिए, r को h में या h को r में लिखेंगे बाद में। Now we need to maximize or minimize the volume। So I will write the expression for the volume, that is pi r square into capital H। So it's obvious, it's very that I will write the value of H in terms of R, that will be busy pi r square, the value of H from the equation number 1, I can say that is nothing S minus 2 pi r square divided by 2 pi r। So basically I have got the volume, okay, r and r gets cancelled, pi also gets cancelled, I am getting 1 by 2 SR। Open this, because we need to differentiate. S is a constant, don't worry for that। Minus 2 pi, 2 also gets cancelled, I am getting pi into r cube। Am I right? So I got the expression for the volume in terms of the r। R is a variable, differentiated and get the answer। हाँ जल्दी करिए, खत्म करिए। This is, I think, this is the last question है। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ds by dr, make it 0, get the answer। Okay, you will get h is equal to 2r। From here you will get the value of r in terms of the s। Okay, from here you will get the value of r in terms of the s। Okay, or you will get an expression s is equal to 4 pi r square, 6 pi r square, whatever you get, whatever the value of s you get in terms of the r, put it here and get the value of capital H and r। चलिए जल्दी करिए, क्यूब रूट स्क्वायर रूट ये सब मत करिएगा। हाँ यस, इट इज द लास्ट क्वेश्चन है। डन। डन, वेरी गुड है, वेरी गुड। इस सिंपल क्वेश्चन है, आई एम जस्ट लिविंग। आई एम, एस की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बताइए, कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ, सर s is equal to 6 pi r। 6 pi r square। Okay, now put the value of x in the equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रख दीजिए। सो आई एम गेटिंग 2 pi r square प्लस 2 pi कैपिटल R H, दैट इज 6 pi r square। उधर 4 pi बन जाएगा तो आई विल गेट h टू बी 2r, h की वैल्यू 2r आ जाएगी। दैट वी हैड टू प्रूव, है ना। क्लियर। ओके, सो जस्ट वेट मिनट, वी हैव टाइम है, टाइम है। मैं अभी देखो अभी एक काम कर रहा हूँ। आई नीड टू डू सम क्वेश्चन ऑन द कोन्स। कोन के ऊपर क्वेश्चन मिस कर गया हूं मैं, इसको मुझे ऐड करना है क्वेश्चंस को, लेकिन व्हाट हैपेंस, आई फॉरगेट ईच ईयर, है ना, भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता है। एंड जस्ट ए मिनट, लेट मी सर्च इट है। किसी ने पूछा था मुझसे क्वेश्चन, और जस्ट ए मिनट। इस डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट होगा, उसको भी मैंने एक्स्ट्रा क्लास में बताया था, पता नहीं कहाँ पे होगा। हम्म, अगर मिल जाएगा अभी फौरन तो इमीडिएट करा दूंगा, नहीं तो बाद में कभी करा दूंगा। हाँ जस्ट ए मिनट।
नो आई डोंट हैव हेयर, यहाँ पे तो नहीं है। इट इज समवेयर, कहीं तो है। अब कहीं ना कहीं तो है, अब कहाँ पे होगा ये, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट आउट है। एक मिनट, अभी मैं देखता हूँ, एक मिनट है। इन्वेस्टमेंट्री, हाँ हाँ देखो मिल गया शायद, शायद। लेट मी सी है। नहीं ये नहीं है। नो आई विल डू है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्च इट आउट। हाँ वो, वेदांग अपने क्वेश्चन जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, अभी कराता हूँ। यस सर। हाँ जस्ट मिनट, हाँ मैं व्हाट्सएप खोल लेता हूँ, अपना नंबर बताइए किस नंबर से आपने भेजा था, मैं सर्च कर लेता हूँ। 9149। 9149। हाँ मिल गया है ना, 44035 है, यस यही है सर। ना। हाँ ठीक ठीक, जस्ट मिनट है, इसको डाउनलोड करता हूँ धड़ से, है ओपन कर दे रहा हूँ, जस्ट मिनट है। हम्म, ठीक है, गलत मैंने वो प्रेस कर दिया, कोई बात नहीं। छोटे क्वेश्चन होंगे, इजी होंगे, हम मुश्किल नहीं होंगे। एंड वी हैव वन मोर क्वेश्चन आई थिंक। खत्म हो गया है, चलिए। हाँ छोटे क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है। इसको, ये क्वेश्चन तो ऐसे दिखता है ना कि पढ़ने का मन ही नहीं है, जिसे कहेंगे मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता है सब चीजें। अब इसको कोऑर्डिनेट से भी किया जा सकता है, कैलकुलस से भी किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है देखा जाएगा, अभी हमने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन दिस टचेस द कर्व देन प्रूव दैट, वी नीड टू प्रूव दैट है। एक सेकंड, एक काम करा रहा हूं, वी आर गिवन दिस टू बी एन एलिप्स। ठीक है, एक लाइन में करा देता हूं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मैक्सिमम मिनिमा में कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमा से नहीं, एक नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, और इलिप्स की इक्वेशन से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, हम इलिप्स से कराएंगे, वो ज्यादा बेटर है, वो काम आएगी, बता देता हूँ। ठीक है, सर्किल वगैरह में भी होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन द होल कोनिक्स, पूरे कोनिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट है सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सबके लिए मैं याद कराता हूँ सबको, मैं सबको याद कराता हूँ। ठीक है, वी हैव एन एलिप्स है, एक एलिप्स है मेरे पास, एलिप्स की फिगर बनाने में परेशानी आ जाती है, तो वी हैव एन एलिप्स, शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, एंड वी हैव ए टेंजेंट समवेयर। ठीक है, इक्वेशन, और इस टेंजेंट का स्लोप m है। ठीक है, वी कैन हैव मेनी लाइंस, एक नहीं हजारों लाइंस हो सकती हैं, देन वी हैव द स्लोप m।
I can have a line here, I can have a line here, it will intersect the ellipse. I may have a line here, it will be outside the ellipse. I can have many lines with the slope m, but the line that is tangent to the ellipse and having slope m, then equation of the tangent, दो चीजें हैं याद करिएगा. तो equation of the tangent of ellipse with slope m, we have a formula y is equal to mx. सर्किल के अंदर आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला था, सर्किल का लिख रहा हूं, बाद में चेंज कर दूंगा. सर्किल के अंदर पढ़ा होगा प्लस माइनस a अंडर 1 प्लस m स्क्वायर. हैव यू रेड दिस और नॉट? जल्दी बोलिए, पढ़ा है? नहीं, 11th में नहीं पढ़ा होगा. जेई के अगर पढ़ेंगे तो जेई के लिए तो जरूरी होता है, 11th में सिलेबस में ही नहीं है. ठीक है, अगर सिर्फ 11th पढ़ा होगा, एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो नहीं होगा. फॉरगेट दिस. सर्किल के अंदर वी हैव द इक्वेशन फॉर द टेंजेंट दैट इज a अंडर 1 प्लस m स्क्वायर. इज द रेडियस ऑफ द सर्किल. But in the ellipse, this term will get changed. Everything will be same, and its formula will be under root of a square m square plus b square. This is the formula for the tangent of the ellipse with slope m. पैराबोला के अंदर भी होता है. पैराबोला के अंदर स्लोप m होगा तो वी हैव द इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस a by m. वेरी इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ. ये आर्टिकल जो टेंजेंट का होता है ना, टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट का स्लोप, दिस इंपॉर्टेंट इन द होल कोनिक्स and in the hyperbola. I'm just talking about the hyperbola. Hyperbola के अंदर भी होता है the same thing that we have in the ellipse. I can write that is equal to mx plus minus under root a square m square minus b square. ठीक है ना? I have told you all those things. Then come to the point. I'm just writing equation of the tangent. अभी मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है. Equation of the tangent with slope m. With slope m. इसको याद करने के, ये जो फॉर्मूले बताएं, इसको याद करने के दूसरे तरीके में बताऊंगा. जस्ट अ मिनट. आई एम जस्ट राइटिंग द इक्वेशन दैट इज y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है. द सेकंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है. इक्वेशन किसी भी लाइन की होती है दैट वी हैव इज y इक्वल टू mx प्लस c. वी रिमेंबर दिस, दैट इज कॉल्ड कंडीशन फॉर टेंजेंसी. हाँ, ये अच्छा वर्ड होता है. So I'm just changing my language. I'm saying condition for tangency. Condition for tangency. We need to remember all these conditions. Condition for tangency. Y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c is the equation of any line with slope m. But it is a tangent, that means c has to be equal to plus minus this or a plus minus under root of a square m square plus b square. Or we can say that the value of the c square has to be a square m square plus b square. ठीक है, ये ellipse के लिए फॉर्मूला हो गया. The similar thing we have for the parabola. For the parabola, condition for tangency is that c has to be equal to a by m. For hyperbola, c square has to be a square m square minus b square. So this is the formula part that I have told you. Now come to the question. Question पे आ जाइए, वापस आ जाइए. ठीक है. The straight line, this line we can write the slope of that line. I can say how much? That is minus of the cos alpha by sin alpha. Can I or not? Tell me. Clear? Yes. And in place of the, okay, just wait. अभी नहीं कर रहा हूं, अभी कन्वर्ट करना है, अभी यहां नहीं कर रहा हूं. Now come to the question part. We are given x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. Y is equal to sin. I am going to write in terms of the y is equal to mx plus c. So I can write y is equal to minus of the cos alpha by sin alpha x plus p upon sin alpha. Can I now apply this formula, condition for tangency, equation number 1? So equation 1, I remember the formula, or I remember the condition for tangency. C is nothing, p upon sin alpha. So p, c square is p square upon sin square alpha is equal to a square. A is nothing, semi-major axis. Okay, so a square m. M is nothing, that is minus of the cos alpha by sin alpha. Do the square, you are getting cos square alpha upon sin square alpha plus b square. I got this. Just multiply with the cos sin square alpha. You are going to get the answer, that is p square, that is a square cos square alpha
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये शायद हमको प्रूफ करना था, है ना? द वैल्यू ऑफ द पी स्क्वायर हैज टू बी दैट मच। एम आई राइट? वेदांत क्लियर है? हाँ, Yes, sir. एक मिनट Yes, sir. अभी बता रहा हूँ, ठीक। we were given the standard equation of the ellipse equation standard थी, the question was very easy, हाँ, इसमें कुछ था ही नहीं, we can apply the formula, no problem, just a minute, I am going to change the question change कर रहा हूँ, नहीं क्वेश्चन तो ये रखेंगे, मेथड चेंज करूंगा, okay, sometimes you may not be given the standard equation of the ellipse or hyperbola, whatever it is, sir. Sometimes you may be given a different question, just a minute, let me change it, okay, ये चेंज हो सकता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस आई कैन से प्लस ऑफ द सी एक्स is equal to 1, then I cannot apply the formula because ellipse is not in the standard form. Okay, I may have equation 2x square plus 3y square plus 10xy is equal to 1. Okay, there is not the standard conics, neither ellipse, neither hyperbola, nothing. Sometimes I may have the 3-degree equation. Okay, in that case, we cannot apply any other formula, so forget about this. Okay, I have a general method that we can apply anywhere, whether it is a 2-degree equation, 3-degree equation, or sometimes I may have log terms, log x, e to the power x, trigonometric term, it doesn't matter. General method that is applicable to each and every type of curve. Okay, that I'm telling you. Okay, let me write the question. Alternate. We are given the line that is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. Okay, this is the line. And we are given a curve that is a ellipse or whatever it is, it doesn't matter. X square upon y square upon b square to be 1. Okay, what I'm saying, I will solve them simultaneously. We are given a curve and we are given a line. I am going to solve them simultaneously. I will get the point of intersection A and B. I will get 2 point of intersection. Okay, sometimes line may be outside, it will not intersect the curve. Okay, sometimes it may intersect the 2 points, sometimes it may be tangent to the curve. All the possibilities are there. It may be outside the curve, it may intersect the curve at 2.3 points, or it may touch at 1 point. All the possibilities are there, but no need to worry. Basically, I am going to solve equation number 1 and 2 to get the point of intersection. Let me see what we are getting. Are we getting the point of intersection? Are we not getting the point of intersection? And how many point of intersection we are getting? Okay, I am going to solve 1 and 2 simultaneously. Okay. So equation number 1 and 2. Okay. I am writing the equation number 2, x square upon a square plus y square upon b square. I am just writing 1 upon b square. I am writing the value of y in terms of the x from the equation number 1. The value of y I am getting p minus x cos alpha divided by sine alpha. This is the value of the y. Its square, that is equal to 1. Okay. Anyway, what I'm saying, I'm opening the bracket. I'm getting x square upon a square term plus p square 1 by b square. I'm just showing. I will get p square upon sine square alpha. Here I will get minus 2x p cos alpha divided by sine alpha. And I will get plus x square cos square alpha divided by sine square alpha to be 1. Okay, I'm going to multiply the whole equation with the sine square alpha. Okay, so I am getting, जल्दी बोलिए, करूं इसको? हाँ, लिखो, प्रोसीड करूं? तो हो जाएगा ना? कैसे होगा ये बताइए? साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई करके वही बन गया। No, just बता रहा है, ऐसा नहीं होगा. I will get something ax square, something x plus something here to be 0. I will get a quadratic equation into x. Okay, I will get 2 point of intersection. I will get 2 point of intersection. 2 point of intersection निकल जाएंगे. But here said this line is tangent. Since tangent, ये tangent है. So that means I will get single point of intersection or single root. Okay, since tangent, I will make delta to be 0. Discriminant को delta को 0 कराएंगे, you will get the answer. ठीक है ना? Clear?
Okay. In case you get delta less than 0, delta negative आ जाएगा, that means no point of intersection. No point of intersection. कोई भी point of intersection नहीं आएगा, that means line does not intersect और line is outside. Line जो होगा outside आ जाएगी. और डेल्टा 0 नहीं आएगा, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ जाएगा. देन इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स. ये तीनों चीजें, हर चीज निकल जाएगी, सारी चीजें निकल जाएंगी. गॉट इट? ठीक है ना? हाँ चलिए ठीक है. वो छोटी क्वेश्चन है, मैंने खाम बड़े तरीके से लिख दिए. मैं इसको छोटे से लिख सकता था, लेकिन जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा मिस कर दिया. बट एनीवे, कम टू दिस पॉइंट. टू कर्व्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट द एंगल. ये दो कर्व्स हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द एंगल. एम आई राइट? ओके ओके. वी आर हैविंग टू कर्व्स. जस्ट अ मिनट, पहले मैंने बताया भी है. आई एम जस्ट राइटिंग देयर इक्वेशन. एक्स क्यूब 3 डिग्री टर्म्स इज देयर, माइनस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 करके लिख दे रहा हूं. आई एम राइटिंग द अनदर इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस ऑफ द y क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 2. दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. ये दो कर्व हैं. वी आर हैविंग टू कर्व्स, दे आर इंटरसेक्टिंग एट एन एंगल, सो वी नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. Okay, as I told you, sometimes we can avoid point of intersection, or sometimes we need to calculate, है ना? So if it is very easy to get the point of intersection, do it right now. Otherwise, I will do later. What I observe. See, just a minute. I wrote the question now. Okay. What I observe. Equation number 1 and 2, I can simplify very easily. I can get the point of intersection very easily. That I am doing. अभी कर दे रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं अब जब लिख दूंगा तो जरूर यूज भी कर लूंगा. क्या दे दो. आई एम सॉल्विंग 1 and 2. जस्ट डू फर्स्ट प्लस सेकंड. आई एम राइटिंग डायरेक्टली. डायरेक्टली लिख रहा हूं. व्हेन यू डू फर्स्ट प्लस सेकंड, okay, you will get x cube minus 3x square y plus 3x square minus y is equal to 0. Basically x and y are equal. You will get this. Am I right or not? jaldi boliye. Am I right? Sir, but the cube equation is x cube minus y cube plus 3x square minus 3x square y plus 3xy square. But the signs are interchanged in there. Sign are interchanging. You are right. हाँ ठीक है. आप सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं. This is the problem. हाँ, ये प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है ना? एक सेकंड, एक मिनट. हाँ, if you put x is equal to y to be 1, just tell me, are you getting the answer or not? x और y दोनों बराबर आ रहे हैं, 1 के बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जल्दी बोलिए. x is equal to y is equal to 1, satisfying both the equation or not? Tell me. Okay, the point of intersection, I am saying its coordinate is 1, 1. Am I right or not? Yes, sir. हो रहा है ना? Yes, sir. Okay. What I am saying, साइन ऑफ इंटरचेंजिंग जो भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. करके बताऊं? Okay, sir. करके बताऊं? ये डायरेक्ट लिख दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. मैंने ठीक है. हाँ, आ रहा है ना? 1 minus 3 बन जाएगा. 1 minus 3 is minus 2, वो भी कर रहा है. 3 minus 1 is equal to, that is satisfying. नहीं तो सॉल्व कर लेंगे, सेटिस्फाई कर हो जाएगा. जस्ट लीव इट. पॉइंट ऑफ टेस्टिंग दैट. नाउ कम टू द पॉइंट. टॉपिक पे आ जाइए. dy by dx निकालने जा रहा हूँ. तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, and I will have to differentiate u into v. 3 will be there. I will write x. I will write 2y dy by dx. Okay. After that, I will write y square and d by dx of x is 1. On the right side, I am going to get 0. Okay. No need to simplify. पहले भी मैंने कहा है कि no need to simplify this term. Okay. Just put x to be 1, y to be 1. You will get the value of dy by dx directly. X to be 1, y to be 1. Put it here. यहीं पे put कर दीजिए. Then I am getting 3 minus 3 x into 2y, that will give me 2 dy by dx. After that, plus y square, that is 1, that is equal to 0. So what I am getting, 3 gets cancelled, so 1 minus 1 dy by dx is 0. Am I right or not? Jaldi boliye. dy by dx, the value of dy by dx is 0. Am I right?
Yes, sir. Okay, now differentiate the second one. दूसरे वाले को differentiate करिए. So I will get 3 x square will be there, dy by dx would be there, and after that गलत लिख दिया क्या? नहीं नहीं ठीक ही लिखा होगा. Plus y would be there, and I will get 2x minus of the 3y square into dy by dx to be 0. Okay. In this equation, I'm going to put x to be 1, y to be 1, huh? X to be 1 and y to be 1. So I'm getting 3 x और y 1 लिखेंगे तो 1 dy by dx आ जाएगा plus 2 minus 3 into dy by dx. Am I right? ठीक है ना? जल्दी बोलिए. कहीं गलत हो गया है? कहीं गलत हो गया है? 3x square dy by dx plus y into 2x minus 3y square dy by dx to be 0. x और y 1 आ रहे हैं तो 3 dy by dx plus 2 minus 3y square dy by dx to be 0. ठीक Sir, है. using this equation, we are getting minus 1 upon 0, which is pi by 2. हाँ हाँ. Using No, upper equation, we are getting 0. we are not. We are getting how much? Sir, minus 6 by 0, Minus 6 by 0. which will be, I think, 90-degree angle. It will 90 be. degree angle. Answer is C. हाँ, आंसर इज पाई बाई 2. आंसर तो पाई बाई 2 आ रहा है, तो आइडिया लग गया था, पहले ही आइडिया लग गया था. ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है. लेकिन एक चक्कर है कि मैंने कोई मिस्टेक लिखी. मैंने ये जो सेकंड इक्वेशन है द ब्राउन कलर से लिखा है, जल्दी जल्दी करता हूँ तो ये परेशानी आती है. कुछ मिस्टेक है सेकंड इक्वेशन में, बता रहा हूँ. आई एम गेटिंग समथिंग वेरी एब्सर्ड. बहुत गलत आ रहा है. आई एम गेटिंग 3 dy by dx, आई एम गेटिंग 3 dy by dx, बोथ गेट्स कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, है ना? ठीक है. आई एम गेटिंग 6 टू बी 0. दैट इज नॉट पॉसिबल. ये नहीं हो सकता है. ये नहीं हो सकता है. So 3x square dy by dx plus I will write y into 2x. ठीक है. लिखा तो सही है. minus 3y square dy by dx. Sir, it is Yes. not defined, so not defined will be equal to angle pi by 2. हाँ, तो Because not defined. slope is not defined at angle pi by 2. Slope is not defined, हाँ. अब यही ऑप्शन बच रहा है, और तो कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा है ना. ठीक है. Yes, sir. आंसर पाई बाई 2 दिया है. जल्दी बोलिए. Yes, sir. हाँ, आंसर आई एम गेटिंग पाई बाई 2. यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इट्स नॉट डिफाइंड. dy by dx, आई एम नॉट गेटिंग द वैल्यू ऑफ dy by dx, है. ठीक है. सो dy by dx I am getting not defined, and dy by dx is infinite. Infinite रख देंगे dy by dx, so then I can say it is 0. ठीक है ना? No problem. No, sir. Okay. I can say dy by dx. I can write. I'm just writing dy by dx. That is minus 6. 3 into 2 will give you 6. So minus 6 divided by 3 minus 3. ये ऐसे आ रहा है. That is not defined. ये infinite है. तो पाई बाई 2 आंसर आ जाएगा. ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई है. वो तो 0 आ गया तभी आइडिया लग गया था. मैंने पहले ही बता रखा है कि in case when we get the slope to be 0 infinite, we need to do geometry. Geometry से होता है, और कोई तरीका नहीं होता है. ठीक है ना? Okay. Okay, let's move. Let's move to the next one. Two men A and B start with the velocity v at the same time from a junction of the two roads inclined 45 degrees. If they travel by different roads, find the rate at which they are being separated. है ना? ये this is the question. We can use the physics also. We can do with the mathematics. हाँ, दोनों चीजों से हो जाएगा. Don't worry for that. Just a minute. Okay. Two persons A and B start with the velocity v at the same time from the junction of the two roads. तो दो roads हैं, उनके junction से start कर रहा है. Just wait a minute. एक मिनट बता रहा हूँ. वन पर्सन, हाँ, ये हमने एक्स और वाई एक्सिस बना दिया. मैथमेटिक्स यूज करने जा रहा हूँ इसलिए कर दिया. वन पर्सन आई एम टेकिंग इज मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस.
and another person is moving on a line with 45 degree. हाँ 45 degree पे दूसरा person यहाँ पे move करेगा. Both the start from the same time. So we need to find the rate at which their distance is being separated. Huh? So after a certain time t, a person will reach here, another person will reach there. They are starting from the person A reach here at the position A, person B reach there at the position B. So we need to find the distance between them. I am taking it to be s. ds by dt. We need to find the value of ds by dt. Is it clear or not? जल्दी बोलिए. Yes. हाँ बताइए कैसे करेंगे. कैसे करेंगे. एनीवे बताइए. फिजिक्स यूज करके भी हो सकता है, मैथमेटिक्स से भी हो सकता है, दोनों चीजों से हो सकता है. ओके जस्ट मिनट ये बता रहा हूँ. अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा है. Person B is moving with a velocity v, person A is moving with the velocity v. For A person A, I'm just starting. At a time, suppose at a distance x, so I can say dx by dt is v. dx by dt is v. लिखा जा सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है. No. हाँ ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट और द पॉइंट ए और पर्सन ए. लेकिन the person B is moving with a velocity v at a 45 degree angle. So x component for B, I'm just writing x component for B. फिजिक्स यूज करके करा रहा हूं तो इजी रहेगा. For B, velocity of the person B along the x axis. ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं. No, sir. What is it? That is v by root 2. Am I right or not? Yes, sir. V by root 2. Velocity of the person B along the y axis is also v by root 2. Am I right? No problem. No, sir. Okay. Now I am writing the relative velocity. I am writing the relative velocity. So velocity of B or A, you can say anything, of A with respect to the B along x-axis. Along x-axis. Both are moving along the x-axis. Person B जो होगा वो x-axis पे भी चल रहा है, y पे भी चल रहा है. तो person x की जो स्पीड है v by root 2 है, इसकी हमारे पास v है. तो velocity of the person A with respect to this, I can say that is v minus v by root 2. Can I or not? जल्दी बोलिए. है ना? Yes, sir. Okay. So distance along the x-axis है, relative distance निकालना हूं. So कोई दिक्कत तो नहीं है. एक सेकेंड. Velocity of B with respect to the A, B को लिख दे रहे हैं with respect to the A along y-axis. B person A is not moving on the y-axis, so its velocity will be v/2. Now I am writing the distance between them, that is I have taken s, है ना, उसको मैंने s कहा था, उसको लिख रहा हूँ. कोई दिक्कत तो नहीं है. No, sir. ओके. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो निकलेगा वो कितना आएगा. ये हम असल में द रेट एट विच इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास मूव हो रहा है. थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ा गया है. ठीक है, एक मिनट एक मिनट. क्वेश्चन क्या है. द रेट एट विच है relative velocity तो निकल गई. they travel by a different route. Find the rate at which they are being separated. दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है. दोनों के बीच का डिस्टेंस तो निकाल लेंगे. जस्ट अ मिनट. थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, कुछ एक मिस्टेक है. कुछ एक मिस्टेक हो रही है.
इसके डिस्टेंस निकाले, इसका ये डिस्टेंस निकाले, या फिर दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट √2। एक मिनट, हाँ एक मिनट। Can we find the distance by multiplying t and then हाँ, टी we'll से मल्टीप्लाई करना use पड़ेगा, vector? टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद हाँ ये डिस्टेंस एक्स पे आएगा, और ये हमारे पास डिस्टेंस एक्स चलेगा। और ये अगर एक्स चले तो x/√2, x/√2। एक सेकंड अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अब सब चलो शॉर्ट में कर दूं, शॉर्ट में है। हमने मिक्सअप कर दिया, हमने Yes. मिक्सअप कर दिया, नहीं हमने मिक्सअप कर दिया। जस्ट मिनट, अभी बता रहा हूँ, अभी बताओ, बगैर कुछ लिखे बता दूंगा, कुछ भी नहीं लिखूंगा, सब अपने आप कर दूंगा। उन्होंने फिजिक्स से मैच करा दिया, दिक्कत आ गई। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, फिजिक्स से मैच नहीं करा रहा हूँ, मुझे लगा था फिजिक्स से आसान हो जाएगा, कर तो रहा हूँ फिजिक्स ही, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जस्ट मिनट, अभी बता रहा हूँ, ये सब हटा दीजिए। एक काम कर रहा हूँ, किसी टाइम पे हमारे पास ए के जो एक्स कोऑर्डिनेट आ गए वो एक्स आ गए, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। पर्सन ए ने डिस्टेंस एक्स चली, ठीक है ना, नो Yes. प्रॉब्लम। ओके, तो पर्सन बी जो चलेगा, ओरिजिन से लेके बी तक का डिस्टेंस एक्स आ जाएगा। लेकिन जब पर्सन ए से बी तक एक्स चलेगा तो एक्स एक्सिस के अलाउंग जो डिस्टेंस आएगी वो x/√2 आ जाएगी, और y एक्सिस के अलाउंग भी डिस्टेंस x/√2 आ जाएगी। एम आई राइट और नॉट? जल्दी बोलिए, टोटल डिस्टेंस एक्स आनी चाहिए, ठीक है ना? Yes, sir. इज इट क्लियर? हाँ, देखो, हमने एल नहीं लिख रहा हूँ, एल नहीं लिख रहा हूँ, मैंने एक्स लिख दिया। इन ए टाइम टी द पर्सन ए हैज रीच एज ए पोजिशन एक्स, तो ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस उसने एक्स चला है, तो पॉइंट बी जो चलेगा डिस्टेंस एक्स ही चलेगा, लेकिन एट द अलोंग 45 डिग्री लाइन। तो पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ओ से बी एक्स आएगा, ओ ए एंड ओ बी बोथ आर एक्स। हाँ, ओ ए एंड ओ बी बोथ आर एक्स, ठीक है। तो जब ओबी की वैल्यू एक्स आ जाएगी तो बी की जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास, एक्स साइन 45 एक्स कॉस 40, यानी कि x/√2 आ जाएंगे, ना? नो प्रॉब्लम, ठीक No, है। sir. हाँ चलिए, ठीक है, प्रोसीड कर जा रहा हूँ। नाउ वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, x2 माइनस x1, x माइनस x/√2 होल स्क्वायर बनेगा, प्लस आई एम गोइंग टू गेट x² by 2, टोटल का अंडर रूट आएगा, आएगा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम एट ए टाइम टी, एम आई राइट और नॉट? जल्दी बोलिए। Yes. हाँ ठीक है, वो आंसर भी बड़ा टिपिकल लिखा होगा। तो आई एम गेटिंग एस, दैट इज नथिंग, हाउ मच, एक्स अंडर रूट ऑफ 1 - 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं? No, sir. ओके, नाउ द रेट एट विच द डिस्टेंस इज चेंजिंग है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये इसने पूछा था, दैट इज ds/dt। ds/dt की वैल्यू जो पूछी है तो टर्म तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आंसर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा होगा। √2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1/2 एंड एक्स इज वेरिएबल dx/dt, और dx/dt को इसने v कहा था। सो आंसर यही आएगा, ds/dt। अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट के अंदर की टर्म हमारे पास 1 आएगी, माइनस आई विल गेट √2, आफ्टर दैट 1/2, है ना? क्लियर है? So where will be हाँ dx by dt? प्लस 1/2 +2 है ना? Sir, एंड dx dx by by, dt. हाँ dx/dt इज v, है ना? V. Okay, sir. हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, दैट इज dx/dt, है ना? Sir, it's getting under root 2 minus root 2. हाँ, √2 - √2, ठीक है ना? सो दैट इज √2 - √2 एंड डिवाइडेड इनटू v, ठीक है ना? Yes. आंसर क्या दिया है ये बताइए पहले।
सर ये दिया अंडर रूट ये 2 दिया ना? माइनस रूट 2। यस सर। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, कहते हो ना कॉम्प्लिकेटेड आंसर, सिंप्लीफाई नहीं हुआ है। तो अंडर रूट में 2 माइनस रूट 2 आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, हो बात फॉलो कर लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है। हाँ, पहले हम फिजिक्स कर रहे थे, फिजिक्स से भी सही कर रहे थे, फिजिक्स से भी गलत नहीं कर रहे थे। हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दी थी, और the distance at which they are being separated, they will give me the relative velocity. Basically इसने relative velocity पूछा है, बेसिकली इसने रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमें डिफरेंशिएट करने में आगे परेशानी आ रही थी। ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दी थी, फिर स्क्वायर रूट करके कर देते, आंसर आ जाता, लेकिन इसको हमने मैथ से करा दिया। ठीक है, यस सर। चलिए प्लीज लॉग आउट, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। है ये मैक्सिमम मिनिमम खत्म हो गया, वी विल स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन। वी हैव डन एवरीथिंग इन द डिफरेंशियल कैलकुलस और नॉट? जस्ट टेल मी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रोडीज, लैग्रेंजे, टेंजेंट, नॉर्मल, ये सब हो गया ना? यस सर। टेंजेंट वो हो गया ना, रोडीज लैग्रेंजे भी हो गई है, एम आई राइट? Yes. हाँ, then we'll start with the integral calculus. Huh? We'll start with the integration from the next class. Okay? So all of you please log out. Thank you, Thank- sir. Thank Okay, you, okay. sir. Okay, okay, thanks. Thanks. Huh?